Over 1 million cinema lovers have already subscribed to Film Companion. What are you waiting for? Hit the bell icon and join our film family. I had completely forgotten the climax of this film. But when I sat down to watch Karthik Calling Karthik abhi this week, I'm like, wait, ये तो title में reveal है. What the hell? हेलो दिस इज सुचारिता और आज लेट्स टाइम मशीन बैक टू 2010 12 साल पहले जब फरवरी में रिलीज हुई विजय लालवानी की कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, जिसमें ही इज क्रेडिटेड फॉर स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग एंड डायरेक्शन, द वर्क्स। लेकिन इसके बाद विजय लालवानी ने दूसरी कोई फिल्म बनाई नहीं आज तक। असाइड फ्रॉम अ सीरीज टाइटल्ड द फाइनल कॉल, ही इज नेवर मेड अनदर फिल्म। हाउ मिस्टीरियस। एनीवे, मिस्टीरियस विजय लालवानी टेल्स द ट्वाइलाइट जोन स्टाइल स्टोरी ऑफ अ मैन हु रिसीव्स फोन कॉल्स फ्रॉम हिमसेल्फ व्हिच चेंज हिज लाइफ एज द ऑडियंसेस लॉजिकल brain is made to keep guessing कि चल क्या रहा है। Spoiler alert, टाइटल में रिवील है। 2010 में फरहान अख्तर was the hottest thing, wasn't he? I mean, he's still pretty hot, but then he was hottest. दिल चाहता है, लक्ष्य, डॉन, ये सब कल्चरल ज़ाइटगाइस्ट का रिसेंटली मेजर हिस्सा बन चुकी थी। फिर लक बाय चांस रॉक ऑन से फरहान अख्तर हीरो भी बन चुके थे। एंड माशाल्लाह व्हाट अ क्यूटी। ऊपर से एन एक्टर हु डिड नॉट वांट टू डू हीरोगिरी, ही फिट राइट इन 2010 बिकॉज़ सबसे रिकॉल वाली फिल्में आप देखें ना उस साल की, तो असाइड फ्रॉम सलमान खान इन दबंग, द रेस्ट डेफिनेटली वर नॉट द यूजुअल फेयर। देयर माय नेम इज खान, राजनीति, इश्किया, लव सेक्स और धोखा, रावण, तेरे बिन लादेन, पीपली लाइव, बैंड बाजा 12, व्हाट अ ग्रेट लिस्ट ऑफ फिल्म्स। कार्तिक कॉलिंग कार्तिक also had दीपिका पादुकोण, who also was the talk of the town, still is, but 5 releases in that year including a massive आशुतोष गवारिकर खेले हम जी जान से। वो पिक्चर अच्छी बनी या नहीं वो बात अलग है, अलग टाइम मशीन करेंगे उसका, but I remember the buzz being very high around it. Now watching Karthik Calling Karthik again, one realizes just how much the film was relying on and investing in these two actors की popularity slash surrounding intrigue coupled with Shankar Ehsaan Loy's soundtrack, hoping कि इतना काफी रहेगा ना, because the story does not hold up, you guys. For a psychological mystery thriller, either the audience needs to be taken completely by surprise with the eventual twist, or make a film so engrossing that every gust of wind is jolting, with every creaking door your breath stops, हर परछाई के साथ 3 possible plot points unveil होते नजर आते हैं, और better still do all of it. And Karthik Calling Karthik, it had gumption, alright? It starts mega strong, the opening credits setting up the main characters' neuroses, introducing us to his therapist right away. He's in a drab office, mundane job, pushover, etc, etc. But when the calls begin and Karthik's personality suddenly changes, the most significant thing which happens is that he manages to Stockholm syndrome a woman into falling in love with his nice guy shtick. He shows her his creepy unsent emails, and this poor girl who should be running away screaming and looking up how to figure out a restraining order in India, instead she cries, she gives him a hug and she falls in love with him. उसको एक्सप्लोर करना चाहिए था। जिस चीज पे ये फिल्म पब्लिकली रिलाई कर रही थी, and it worked also, is the weakest part of this film. Holds up the least, the love story. Shanali is supposed to be an architect who's a modern woman because she dates one man and smokes 2 cigarettes. It's such a terribly written character. Bechari barely qualifies as a manic pixie dream girl also. Just about the right amount of sexy mixed in. At one point she calls Karthik a safe guy and he's like, ah, shucks man. Now I won't get laid. पता नहीं क्या मजबूरी थी इन दोनों के लव एंगल में घुसने की कि ये फिल्म फंस गई। And suddenly from a solid opening as a psychological thriller, it becomes Hey yeah I wanna get closer to you. उफ तेरी अदा जितना बैंगर गाना था उतना ही पॉइंटलेस इस फिल्म में। And it's the remnant of an era जब एक हिट गाना चाहिए रहता था हर एल्बम में, तभी फिल्म चलेगी। शॉपर स्टॉप की ब्रांडिंग एक ऐसे मोन्टाज में डाल देना है ना, चला देंगे यार पिक्चर। For real, you could watch the middle 45 minutes at 1.5x the speed and not miss a single detail. Final twist तक आते आते Karthik Calling Karthik just gives up and just like, yeah, he's schizophrenic. His judgmental therapist told him this about an hour back. Remember? 2010 में बड़ी थ्रिलिंग थी ये फिल्म क्योंकि चलो कुछ नया ट्राई किया। And now I'm like, okay, so he's solving a Rubik's cube and he's solving it well when he's being controlled by his alter ego. तो मतलब क्या? Why is it a Rubik's cube? क्यों दूध वाला says आपका 3 महीने का बिल बाकी है? क्यों his new landline phone is Japanese? Why does Shanali smoke in her cabin hoping no one will spot her, fully ignoring the fact that her walls are literally made of glass? I was actually quite thrilled to revisit Karthik Calling Karthik क्योंकि baby Farhan and baby Deepika are adorbs max. लेकिन nothing could have prepared me for Vivan Bhatena की overacting and a drunk Shanali drinking whiskey and saying, wine is for girls, darling.
यू नो गो बैक एंड वॉच द ट्रेलर ऑफ दिस फिल्म ऑन यूट्यूब. इट सजेस्ट्स कि ये एक थ्रिलर है अबाउट अ मैड सक्सेसफुल गाय who's freaking crushing it at life until one day his dark secret comes out and he loses everything. अगर इस वन लाइनर को कमिट करके रहती ना ये फिल्म, if it had stuck to show don't tell and it didn't bother that how he gets to be so successful and how he's managed to gaslight a woman into loving him, क्या ये सही ब्लैक मिरर का 45 मिनट्स का बेहतरीन एपिसोड बनता in my opinion. Anywho, Netflix पर ये फिल्म है. If you want to disagree with me and come fight in the comments तो देख कर आओ, फिर लड़ाई करते ना कम. मैं हूँ सुचारिता, मुझे मिलो YouTube, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह मेरे चैनल्स पे, फिल्म कंपेनियन पे भी आती रहूंगी. अगले टाइम मशीन में क्या चाहिए, क्या देखूं, बताओ कमेंट्स में.